Shifting focus, we are getting some breaking news coming in from Jammu and Kashmir, where the State Investigation Agency, or the SIA, has arrived, in fact, to conduct some searches at multiple locations in Srinagar in connection with the 1990s abduction and killing of Kashmiri Pandit woman Sarla Bhatt, as per the official's statement. The SIA teams, assisted by police and CRPF, launched simultaneous raids at 8 locations across the city early this morning. The searches are still going on, with no immediate details about the arrests or recoveries that have been made so far. The case pertains to the abduction and killing of Sarla Bhatt back from April 1990 during the peak of militancy in the valley. We'll bring you more details regarding the breaking news coming in this hour, straight from Jammu and Kashmir. We're waiting for some more details to emerge. It's a developing story. We have been given to understand that the SIA has arrived and in fact is currently searching multiple locations in Srinagar in connection with the 1990s abduction and killing of Kashmiri Pandit woman Sarla Bhatt, as per the official statement. Now, the SIA teams, assisted by police as well as CRPF, launched simultaneous raids at around 8 locations across the city early this morning. We are still waiting for some more developments to emerge with regards to that. The searches are still going on, is what we've been given to understand, with no immediate details about the arrests and recoveries that have been made so far. But the case pertains to the abduction and killing of Sarla Bhatt back from April 1990 during the peak of militancy in the valley. So, big breaking news coming in straight from Jammu and Kashmir. It's 36-year-old Sarla Bhatt murder case back from 1990. My colleague Ankit Bhatt is joining us on the phone line to provide us more details. Ankit, हमें और क्या जानकारी निकल कर आ रही है सामने, उस बारे में बताइए, क्योंकि अभी तक हमें अरेस्ट और क्या-क्या रिकवरीज हुई हैं उस बारे में कोई आइडिया नहीं है। देखिए, एसआईए की तरफ से रेड जो है वो की जा रही है। अलग अलग जगहों पे एसआईए की तरफ से रेड जो है वो की जा रही है, लेकिन खास बात ये कि तकरीबन 35 साल के बाद जो एक केस है सरला भट्ट का, वो रीओपन किया गया है। 1990 में किस तरीके से आतंकवाद चरम सीमा पर था, खासतौर पे कश्मीर घाटी में, और उसी के तहत जो सरला भट्ट, जो कि महज 27 साल की जो महिला थी, उसको किस तरीके से बेरहमी से आतंकियों ने उसका कत्ल किया, और आज तकरीबन 35 साल हो चुके हैं। एसआईए की तरफ से केस को रीओपन किया गया है और इसी के तहत जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। 8 जगहों पे जो रेड है वो की जा रही है। पूरी तरीके से तथ्य जो है वो जुटाए जा रहे हैं ताकि इस जो सरला भट्ट है उसको इंसाफ मिल सके। और बड़ी डेवलपमेंट मानी जा रही है, क्योंकि 35 साल एक काफी अरसा हो जाता है जब पहली बार एसआईए की तरफ से इस तरीके का कदम जो है वो उठाया गया है। और 8 जगह जो श्रीनगर में है वहां पे जो रेड्स है वो इस वक्त चल रही है। जी अंकित, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वी विल कंटिन्यू टू गो बैक टू आवर रिपोर्टर्स टू गेट मोर डिटेल्स विद रिगार्ड्स टू दैट। इट्स एन इमर्जिंग स्टोरी स्ट्रेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। A 36-year-old case has been opened yet another time. SIA has made a big breakthrough. Multiple locations are currently under scanner at the moment. The investigation is still going on. We don't know much details with regards to the arrests and recoveries that have been made, but the case pertains to the abduction and killing of Sarla Bhatt. She was a 27-year-old Kashmiri Pandit nurse from Anantnag. And this is with regards to her murder. The case has been reopened after so many years during the peak of militancy in the valley that transpired back in the year of 1990.